वेलकम टू माय चैनल अखंड क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हम मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़े, मोनो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़े और मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में भी स्टडी किए। ग्लूकोज की ओपन चैन और क्लोज चैन के बारे में डिस्कस किए। आज की वीडियो में हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंस between glucose and fructose। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही मोनोसैकेराइड्स हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। Then here glucose and here is fructose। ग्लूकोज एक एल्डोज है, फ्रक्टोज कीटोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हेक्सोज हैं, मतलब इनके अंदर दोनों के बीच में दोनों में 6 कार्बन का एक दोनों मोनोसैकेराइड्स है। ग्लूकोज एल्डोज है, इसके मतलब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड होगा। 1 2 3 4 5 and 6। H OH and OH। This is structure of glucose, and in fructose also the 6 carbons are present, 1 2 3 4 5 and 6। In fructose ketose group is present। ketose is the carbon, this is a ketone group। So in carbon 2 had OH, H OH OH H OH H and OH H and H। This is the structure of fructose and this is the structure of glucose। In glucose, aldehyde group is CHO group, aldehyde group is present। In fructose, ketone group is present। Ring is both are the structures are open chain structures, but the ring structures of glucose is as it is hexagonal structures। Ring of glucose is hexagonal, in which carbon 1 2 3 4 and 4 5 and 6 CH2OH is present। This is hexagonal ring, where in fructose pentagonal ring is formed। Just this is structure of pentagonal fructose and this is structure of hexagonal glucose। The ring of glucose is known as pyranose। The ring of fructose is known as fructose। Glucose
and fructose both are isomers of each other. Isomers of each other. Isomers are such compounds whose molecular formula are same but their structures are different are known as isomers. So both molecular formula are same, C6H12O6, but their structures are different, so they are the isomers of each other. Glucose and fructose both are reducing sugar. Reducing sugars are those sugar in which cuprous ion, Cu plus cuprous ions reduce into cupric ion. In reducing sugar, aldehyde or ketone group is free in compound. Examples of glucose, examples of hexose are glucose, fructose, galactose, mannose. These are the different examples of hexose. So both glucose and fructose both are reducing sugars because they have in fructose ketone group is free, and in aldehyde and in glucose aldehyde group is free. So 5 carbon sugar is known as pentose sugar. An example is ribose sugar, deoxyribose sugar.